Shukrana Guruji for this beautiful, blissful, divine satsang and blessing us with the seva of reading as well as listening to the Shiv Puran. Let's begin with a synopsis of the last week. Last week we read chapter 30 of Shatarudra Samhita of the volume 3 of the Shiv Puran. In this, we read about the first incarnation of Lord Shiva, which was called as Avduteshwara. This incarnation of Lord Shiva dispelled the arrogance of Indra. Now, formerly, Indra, Brahaspati, and other gods went to Kailasha to see Lord Shiva, and Lord Shiva wanted to test their eagerness to see him. So he assumed the form of a Avduta, which was a fierce-looking Purusha with matted hair and was naked. He blocked their way, and when Indra saw him, Indra, who was consumed by his arrogance, asked him who he was and whether Lord Shiva was in his abode. Now the Avduta, who was none other than Lord Shiva, did not reply. Indra asked again, but Avduta did not reply. Now this happened many times, and this caused Indra to be furious. So he took out his thunderbolt to kill this Avduta, and just then Lord Shiva stunned Indra's hand, and blazing fire came out of his third eye. When Brahaspati saw this, he instantly recognized this Avduta to be none other than Lord Shiva, and he bowed down in front of Lord Shiva and asked for forgiveness and eulogized him greatly with devotion. He also forced Indra to bow down in front of the Lord and ask for forgiveness. Now, he also requested Lord Shiva to withhold that fire that was coming from his third eye and cast it elsewhere, and also forgive Indra. He gave him a name called Bhaktvatsala. Now, Lord Shiva became delighted with Brahaspati and gave him a name Jiva because he was responsible for saving Indra's life. And at the request of Brahaspati, he cast off this fire that was coming out of his third eye in a briny sea. And this fire turned into a boy named Jalandhara. Now this boy became the leader of the Asuras, and at the request of gods, later Lord Shiva slew him. After granting this boon on Brahaspati and dispelling the arrogance of Indra, Avduta vanished from there, and Indra and Brahaspati went to their respective abodes, happily and contented. Now today we will read chapter 31, which is the incarnation of Shiva as Bhikshuvarya, and Sunita auntie will be reading this chapter in English, and Reema auntie will be reading this chapter in Hindi. Hope you enjoy the readings. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji, Shukrana to Guru Sahib for granting me this seva. Apologies in advance for any errors and omissions. Chapter 31. The incarnation of Shiva as Bhikshuvarya. Nandishvara said, O excellent sage, I shall now narrate the incarnation of Shiva, in which he dispelled the suspicion of a Brahmin woman. There was a king in the land of Vidarbha named Satyartha. He was virtuous, regularly observing truthfulness, and a favorite of great devotees of Shiva. O sage, as the king ruled over the kingdom virtuously, observing piety to Shiva, a long time elapsed very happily. Once a great fight ensued between that king and the Shalvas, who laid siege to his city with many armies puffed up with their strength. The king of Vidarbha had a terrible fight with them, but his armies were destroyed, and he was killed by Shalvas due to adverse fate. When the king was killed in the battle by the Shalvas, the terrified soldiers who survived death fled along with the ministers. His crowned queen, who was pregnant, who had been imprisoned by the enemies, escaped from the city, O sage, during the night. Coming out of the city, the grief-stricken crowned queen slowly went very far in the eastern direction, with her heart set on the lotus-like feet of Shiva. Early in the morning next day, after she had traversed a long way, the queen saw a pure lake, thanks to the mercy of Shiva. After reaching the banks of the lake, the distressed beloved of the king of tender body resorted to a shady tree for rest and stay. Fortunately, in an auspicious and meritorious hour, the queen gave birth to a son endowed with all divine characteristics. The
thirsty mother, the wife of the king, entered the lake for drinking water, but as willed by fate, she was devoured by a crocodile in the water. The son, bereft of father and mother, distressed by hunger and thirst at the time of birth, cried out, "O sage, when the new-born baby was weeping and wailing in the forest, Lord Shiva, the immanent soul and protector, was moved to pity. A wandering beggar woman came there accidentally, urged mentally by Shiva, the dispeller of fear. She was a widow and was herself carrying her 1-year-old son. She saw an orphan child weeping there. O sage, on seeing an infant boy in the desolate forests, that Brahmin woman was surprised and pondered over the situation in diverse ways. An extremely wonderful thing has been seen by me now. It cannot be conceived by the mind or explained in words. This infant, whose umbilical cord has not been cut, lies on the bare ground. He has no mother. He is weeping, but he is very brilliant. He has no parents or persons to help him. What might have caused this? Alas, how strong is the power of fate! I do not know his parentage. There is none who knows him. Whom can I inquire about the details of birth? I feel drawn towards him. Without knowing his birth and parentage, I shall not touch him, although I wish to nourish him and bring him up as a child born of me." Nandishvara said. While the excellent Brahmin lady was musing thus, Shiva, favorably disposed to his devotees, took pity. Lord Shiva, of great sports, bestower of happiness on devotees in every respect, unconditionally forever, by himself assumed the form of a mendicant. The mendicant, who was Lord Shiva himself, suddenly came to the place where the doubting Brahmin lady, desirous of knowing the details, was standing. The Lord, whose ways are unscrutable, who is the storehouse of mercy, and who assumed the form of the leading mendicant, laughed and told the Brahmin lady. The mendicant said, "O Brahmin lady, do not entertain any doubt in your mind. Do not be sorry. Protect this poor boy, your adopted son, lovingly. Ere long you will attain great glory through this infant. Nourish this extremely brilliant infant by all means." Nandishvara said. That Brahmin lady respectfully and lovingly asked Shiva, the storehouse of mercy, in the form of a mendicant, who spoke thus. The Brahmin lady said, "At your behest, I shall nourish and bring up this boy as though he is my own. There shall be no doubt in this. You have come here by my good fortune. Still, I wish to know the particular details and facts about him. Whose son is he? Who are you that have come here? O Lord, O excellent mendicant, again and again the thought comes to me that you are Shiva, the ocean of mercy, and this infant had been your devotee formerly. Through some defect in his past actions, he has attained this plight. After experiencing it, he will surely attain glory, thanks to your bliss. It is by your Maya that I have been deluded. I had lost my way. In order to protect him, I have been urged by you to come over here." Nandishvara said, Shiva, in the guise of a mendicant, spoke to the Brahmin lady, who had attained perfect knowledge by seeing him and who evinced the desire to know the details. The mendicant said, "O Brahmin lady, listen with pleasure to the antecedents of this boy. O sinless one, I shall mention all the details to you. This boy is the son of Satyartha, king of Vidarbha, a great devotee of Shiva and devoted to his duty. Listen, the king Satyartha was killed by his enemies in battle. His excited and distressed wife set out from the palace at night. She came here in the morning and gave birth to this boy. Due to thirst, she got into the lake and, as fate would have it, was seized by the crocodile." Nandishvara said, Thus he narrated to her all the details, the manner of his birth, the death of his father in the battle, and that of his mother due to the crocodile. "O great sage," then the Brahmin lady, who was surprised, asked the mendicant of perfect knowledge in the form of a Siddha again. The Brahmin lady said, "O mendicant, how was his father, the king, killed in the midst of his enjoyment of excellent pleasures by his enemies, the Shalvas, in a few days? How was the mother of this infant devoured by the crocodile so suddenly? How did he happen to be orphaned and helpless ever since his birth? How is it that my son too is very poor and a beggar? O mendicant,
How will these two sons attain happiness? Please tell me. Nandishvara said, on hearing these words of the Brahmin wife, the delighted mendicant Lord Shiva himself said laughingly. The mendicant said, O Brahmin lady, I shall answer all questions in detail. Listen with attention to this excellent narrative. The father of this boy, the king of Vidarbha, was the excellent King Pandya in his previous birth. That king was a devotee of Shiva. He ruled over the entire earth virtuously. Quelling all disturbances, he made all the subjects happy and contented. Observing fast and other rites in the day and night, on a Trayodashi, 13th day, once he worshipped Shiva, the Lord of all, at dusk. As he was worshipping Shiva at dusk, in the course of his holy rites, there arose a great noise in the city, hideous in every respect. On hearing that noise, the king left the worship of Shiva unfinished and went out of his palace suspecting the arrival of enemies. In the meantime, his powerful minister came near the king, catching hold of the enemy king. On seeing the enemy king, he was extremely agitated by anger. Disregardful of the right course, he caused him to be beheaded. Without concluding the worship of Shiva, the defiled king, confused in mind and bereft of auspiciousness, took his food at night with pleasure. He was born as the king Vidarbha. He observed holy rites of Shiva during his birth also. Since there was a hindrance to his worship of Shiva during the previous birth, he was now killed in the midst of his enjoyment. His son in the previous birth was born as his son in this birth too, but he was bereft of riches due to the break in the worship of Shiva. The mother of this boy had killed her co-wife in the previous birth. Hence, due to that sin, she was devoured by the crocodile in this birth. Thus, their activities have been narrated to you. People having no devotion to Shiva and not worshipping him attain poverty. This son of yours was an excellent Brahmin in his previous birth. He spent his life in accepting gifts, but he did not perform holy rites, like sacrifice, etc. O Brahmin lady, hence your son has incurred poverty. Seek refuge in Shiva in order to ward off that sin. Let the worship of Shiva be performed by these two sons. Only after the investiture with the sacred thread will Shiva bestow glory. Nandishvara said, after instructing her thus, Shiva, in the form of a mendicant, favorably disposed towards his devotees, revealed his real self to her. On coming to know that he was Lord Shiva, the Brahmin lady bowed to and eulogized him with choking words full of devotion. Even as the Brahmin lady stood watching, Shiva, who had taken the form of a mendicant, vanished there itself. When the mendicant disappeared, the carefree Brahmin woman took that boy and her son home. She took up residence in the beautiful city Ekachakra and nourished the prince and her own son with excellent food. Their sacred rites and the investiture with the sacred thread were performed by the Brahmins. They grew up thus, devoted to the worship of Shiva in their own house. O dear, at the behest of the sage Shandilya, they observed vows and restraints and performed the worship of Shiva during dusk. Once, when the prince went to the river for his bath without the Brahmin boy, he found an excellent pot of treasure. Thus 4 months elapsed as the two boys continued their worship of Shiva. As they continued the worship of Shiva again, with great joy, a year elapsed in the very same house. O sage, after a year had elapsed, the prince once went to a forest along with the Brahmin boy. There, a Gandharva came by chance and gave his daughter in marriage to the prince. The prince ruled over the kingdom without any check or hindrance. He considered the Brahmin lady who brought him up as his mother and the Brahmin boy as his brother. In name of Dharmagupta, he continued to propitiate the Lord of gods and enjoyed pleasures along with the princes in the kingdom of Vidarbha. Thus, incarnation of Shiva as the Bhikshuvarya bestowing happiness on the prince Dharmagupta has been narrated by me now. This narrative is pious, extremely sanctifying and holy. It is an instrument for attaining virtue, wealth, love, and liberation. It yields all pleasures. He who listens to this tale or narrates this to others with pure mind enjoys all pleasures here and goes to the region of Shiva hereafter.
That concludes the reading in English. Jai Guruji. Rima Aunty will now read in Hindi. Jai Guruji, Shukrana Guruji for the blessed seva. भगवान शिव के भिक्षु वर्यावतार की कथा राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजन भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सतशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैव योग से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विह्वल हो भाग खड़े हुए। मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गईं। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी के भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर तक रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरीं। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रहण ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांग कर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? ना जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं इस बालक का अपने ओर से पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान ना होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो।
यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूँगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है, और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक ग्रहण ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शाल्व देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रहण ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर्य शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडेय देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई।
एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदनंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।